Hello doctors, in this video we will learn what to do or what not to do when a patient of ventricular tachycardia comes. So assume if a patient presents to you with heart rate more than 100. Heart rate more than 100, that is tachycardia. What is normal heart rate? Normal heart rate is 60 to 100. If it is less than 60, then it is bradycardia. If it is more than 100, then it is tachycardia. So a patient presents to you with heart rate more than 100, that is tachycardia, and palpitations. You perform an ECG, and ECG shows broad complex tachycardia, that is wide QRS complex ventricular tachycardia. If it is narrow QRS complex, then it is supraventricular tachycardia, and if wide QRS complex, that means ventricular tachycardia. So we can see ECG. In this ECG, we can see here the wide QRS complex is there, wide QRS complex, wide QRS complex, हर जगह अपने को wide QRS complex देखने को मिल रही है। Wide QRS complex मतलब ventricular tachycardia. अगर यहीं narrow QRS complex होता तो supraventricular tachycardia, but in this it is ventricular tachycardia. So in such patient, never give calcium channel blocker like verapamil. But why? Because it converts ventricular tachycardia into ventricular fibrillation. आया तो पेशेंट ठीक होने के लिए था, बट आपने और भी ज़्यादा उसको खराब कर दिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, टैकिकार्डिया से भी ज़्यादा खराब. It will exacerbate the patient condition, so never give CCB, that is calcium channel blocker, to such patient. Then what to do in such cases? First of all, look whether the patient is stable or unstable. Unstable, what do you mean by unstable? Unstable is, that is heart rate is very high, that is, and BP is very low, dehydrated. अनस्टेबल आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, समझ में आ जाएगा जब बीपी वगैरह आएगा. क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा कि अनस्टेबल है, क्वेश्चन नहीं बोलता है तो बीपी से पता चल जाएगा बीपी काफ़ी कम है, बीपी या कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक बीपी लेस देन 80 जा रखा है, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी की बात कर रहे हैं, लेस देन 80 हो रखा है, और उधर हार्ट रेट मोर देन 140 जा रखी है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि अनस्टेबल है पेशेंट. अनस्टेबल पेशेंट को तो डायरेक्टली कार्डियोवर्जन, ठीक है. एंड इफ पेशेंट इज स्टेबल, देन वी विल गिव ड्रग थेरेपी like amiodarone or lidocaine. If patient is not responsive to that, then we will have to do cardioversion.